काफी लोग बोलते हैं कि इंडिया इज डूइंग ग्रेट एंड ऑल राइट. आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी सोशल मीडिया एंड ट्विटर पे, एंड इंडिया इज शाइनिंग एंड ऑल थिंग, राइट? एम आई राइट? बट वी आर लुकिंग एट द करेंसीज. हम निफ्टी को जो देखते हैं वो INR में है, and FIIs put money into dollars, right? The biggest investor in India. Is this the same with the FIIs? जो इंडियन इन्वेस्टर हम फील कर रहे हैं, क्या वही FIIs भी वही फील कर रही है? तो ये मैंने चार्ट लिया है इक्वल वेट निफ्टी और S&P दोनों को, अगर आप देखेंगे तो, राइट. ये है आपका कोविड हाई, मतलब कोविड से लेके अभी तक वी आर ऑलमोस्ट इन अ डॉलर टर्म S&P के सामने इक्वल परफॉर्मेंस है. बट मेजोरिटी FIIs had made money into, let me share you that, in a Nasdaq, right? Because it was a tech rally, right? So let's see this thing. So can you see that ये कोविड का हाई है जहां से बुल मार्केट शुरू हुआ. And if you see after 2008, can you see the massive underperformance from India? 2008 के बाद जब ग्लोबल क्राइसिस है, उसके बाद एक नया बुल मार्केट शुरू हुआ, राइट? We have underperformance in dollar term 80%. मतलब FII has done great into their home market, right? So I hope you all have this clarity. और आपने कभी इस तरह से देखा नहीं होगा ना, nobody is discussing, right? Because everybody is discussing Nifty INR, but for FIIs it is a dollar term, right? For them they put the dollar and they get back also dollar. तो उनको डॉलर्स में ही रिटर्न चेक करना होता है और उनको डॉलर ही लेके जाना है, तो उनको डॉलर टर्म्स में ही पता है. So biggest investor in India is not outperforming. That is the first thing. Second thing जो अभी दिख रही है, that is very good in an Indian investor perspective, right? Because we started outperforming जब ये इन्फ्लेशन के जो इश्यूज आए ग्लोबली आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन वॉर, we are outperforming US market, we are outperforming S&P, we are outperforming Nasdaq, we are outperforming almost every market in the world. So we are doing extremely good. So that is very good thing. So once these bear markets end, जो US में शुरू हुआ है, जो बहुत सारी तकलीफ हो रही है अपने, तब अगर हमने यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा, अगर यही परफॉर्मेंस जो हम अभी शो कर रहे हैं, if that continues, so we need to observe, then we are going to have one of the best bull market that we have not seen in last 10-15 years. So you should have this clarity. So this is a good green shoots that we need to observe, because दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े FIIs है, दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े फंड मैनेजर, those who invest globally, we are on their first priority. कि जैसे ही उनको ग्लोबली रिस्क ऑफ लगा कि रिस्क ऑन होने वाला है, they will be the first people to look at the Indian market and put their money into Indian market. But now, because they are into risk off, they are raising the cash across the globe, right? जितेंद्र भाई, घर बेच के पैसा लगाने का माहौल आएगा, बट घर बेचना मत. आई एम जस्ट वो कॉन्टेक्स्ट यूज करने का एक ही रीजन था कि आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आएगा कि कहाँ पे ग्रेट मेगा बुल रन्स क्रिएट होते हैं, राइट? So this is that you need to taken care of. Always remember this thing. Is this information is valuable to you? Does this make any difference to you as an investor?